n omega के करने. Okay, we have to differentiate with Okay, sir. respect to omega. So now 1 by c, this will become how much? If you keep n as a constant, you have to differentiate omega with respect to omega. Second part, you have to keep omega as a constant, you have to differentiate n with respect to omega. Okay, so it means 1 by Vg itna hai. So what I can write? Is it okay na? So what I can write? Vg will be how much now? Vg कितना हो जाएगा? C by d by d omega by d omega, that will be 1. So n plus omega plus dn dn by by d omega. omega. Okay. ठीक है? Okay, sir. Okay. So this you have to prove. ठीक है ना? Also, it's a very simple thing. Okay. But you may get this kind of question. Now today we'll discuss few problem on Doppler effect. We already have seen the derivation part, so let us do few problem on Doppler effect. Okay, so first problem we are going to discuss. So you have a car, and it is moving towards a hill. Okay, this is your hill. Okay, the velocity of this car is given. Velocity of this car is v equals to 30 meter per second. Velocity of this car is given. The frequency of horn of this car, that is given as 60 hertz. So this sound wave will go. It will be reflected back by this hill, and it will come back. Okay, so this frequency of this horn is 600 hertz. This frequency of sound will go, it will be reflected back from this hill. Now the driver, how much frequency of the sound wave when it will reflected back from this hill? So how much frequency of this reflected sound will be noted by driver? So you have to calculate the frequency of reflected sound noted by this driver. How much it will be? Okay. How will proceed? And also they have given you another, the velocity of, so this is the velocity of this source. Okay, source or car. The velocity of sound is also they have provided you, that is 330 meter per second. So problem is simple. You have a car, the frequency of a horn is 600 hertz. This frequency will go and it will reflected back from this hill, and the frequency of that reflected sound note down by this driver will be f dash, and this f dash you have to calculate. Is it clear to all? Is this question clear to all? Yes, sir. Yeah, question Yes, सबको sir. clear है? Okay. Now how will proceed? This question is really interesting. So पहले मैं क्या करूंगा? Suppose this is your source. Car is behaving like a source. Okay, its frequency of the source is how much? 600 hertz. Okay, velocity of the source is how much? 30 meter per second. ठीक है, अब मैं क्या assume करूंगा कि भाई आपका a hill में, this is your hill, so let us assume some observer is here. Let us assume some observer is sitting at this hill. Okay, so now the case is
the source is moving towards observer and observer is at rest. So frequency note down by this observer will be, let us assume that is n dash. So source is moving, observer is at rest. Frequency of sound note down by this observer, that is n dash. N dash will become how much? So it will become f into velocity of sound divided by velocity of sound minus velocity of source, right? And everything is given. F is given, that is 600 hertz. Velocity of sound, that is 330 meter per second. Velocity of sound, that is 330 meter per second, and velocity of source, that is given how much it is, 30 meter per second. Okay, so this is the n dash, the frequency note down by this person here. Now second time, what will happen? Second time, so this observer will behave like a source, because this n observer will behave like a source, because this time this point will produce light having frequency how much? Its frequency will be n dash. So this point, the observer itself now become a source having frequency n dash. Okay, and driver is now become what? So driver will become as an observer. So what is the situation now? You have a source that is producing sound wave having frequency how much? N dash, and source is at rest. You have driver, that is driver is the observer, and driver is moving towards the source. Is it clear what I am saying? So first, what I have calculated, I have calculated the frequency that will observe by observer when this source is coming towards hill. So I know this formula, n dash equals to n into v by v minus vs. So it means n dash I have calculated. Now second time this point will behave like a source, because this ray will come back, it will reflect it back, right? So second times this will behave like a source having frequency n dash, okay, and this car, the driver, will behave like a observer. So how much frequency note down by this observer, that is f dash, that they have asked. So f dash will become now how much? So the frequency of the source is how much? N dash, and observer is moving towards source. So what will be the formula? If observer is moving towards source with velocity 30 meter per second, so what I can write? N dash into v plus 30 by v. And I know n dash is how much? So n dash is, we have already have calculated, that is 600 into 330, right? 600 into 330 divided by 330 minus 30. So this is all about your n dash. Now you already have v. V is how much? V is the speed of sound. So that will be 330 plus 30 divided by 330. So this 330 will be cancelled. You will basically get 600 into 360 divided by 300. Okay. So if you calculate it, I have calculated, you will basically get 720 hertz. So the frequency of reflected sound observed by this driver will be 720 hertz. So very interesting problem, and there is a very conceptual problem as well. So you have a source. So first you have to think, you have some observer. So observer observe this frequency. Observer is at rest. So observed frequency will be how much? N dash equals to f into v by v minus vs. This is the case when observer is at rest and source is moving towards observer. Now second time this observer will become source having frequency n dash,
and that is fixed, and driver will be observer, and observer is moving towards stationary source. So you have to use this formula. F dash equals to n dash. N dash is the frequency of source into v plus velocity of observer divided by velocity of sound. And we already have calculated n dash, just you have to substitute, and you have to substitute this data. So this frequency will become 720 hertz. So you can see that apparent frequency observed by this driver will be higher as compared to its original frequency. Okay, is this question clear? Is it clear? क्या इसमें कोई डाउट है किसी का? हाँ, यस सर सेकंड केस में सर जैसे सर जो ऑब्जर्वर है सर वो मूव कर रहा है टुवार्ड्स की ओर नहीं सर, टुवार्ड्स सोर्स की ओर सर, रेस्ट तो सोर्स रेस्ट में है सर. हाँ, so this reflected point will behave like a source. Reflected point will behave like a source, right? ऐसा लगेगा कि आपका, हाँ सर जो पहले से सोर्स था सर वो तो रेस्ट में हो गया सर. देखो यहाँ पे, हाँ देखो पहले देखो ये आपका सोर्स है, तो ये आपका ऑब्जर्वर है, राइट? सो पहला जो केस है, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? F dash equals to F into V by V minus Vs, and velocity of source is given, that is 30 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया उस साउंड वेव का. अब सेकंड टाइम यही साउंड वेव क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बैक होगा. तो ऐसा लगेगा कि ये आपका सोर्स है, यहाँ से साउंड, समझ गए? ओके, यस. Okay, now next problem is also interesting. So if you have done, I can erase this part. Have you completed this part? Yes, sir. Now problem number 2. Okay, so problem number 2, you have a road number 1. This is your road number 1, and this is your road number 2. Okay, they are actually perpendicular. Okay, there is a source of sound that is moving away, from this junction. So there is a source here. Okay, there is a source, its velocity is Vs, it is moving away from this junction. Okay, and there is a observer having velocity Vo. Okay, having velocity Vo, this observer is moving towards the junction. So this is your junction point. Okay, okay, so observer is moving towards junction. So there are two paths. Path number 2-1, observer is at path number 2, it is moving towards the junction, and source is at path number 1, and it is moving away from this junction, and their velocity is Vo and Vs. In source you have a horn, it is producing some sound having frequency F. Okay, now let us join the line between source and observer. Let us join the line between source and observer. If this, if the angle between the direction of propagation of observer and direction of line joining between source and observer, if this angle is θ2, and if the angle between line joining between source and observer and source, if this angle is θ1, okay, then the frequency observed by this observer will be how much? So you have a two path, 1 and 2. एक path में कौन है? Observer है, that is moving towards the junction. दूसरे path में कौन है? Source है, that is moving away from the junction. Okay, now the angle between observer का जो direction of motion है और line joining between source and observer,
the angle between the motion of observer and line joining between source and observer, if this angle is θ1, and angle between the direction of motion of source and line joining between source and observer, if this is θ1, then frequency observed by this observer of this horn will be how much? F dash will be how much? तो इसका component लेना पड़ेगा. So velocity along this the velocity of observer is VO along this. तो इसका component along line joining will be how much? इधर कितना हो जाएगा इसका component? The velocity component of observer along the line joining of source and observer will be how much? It will be V0 cos theta. VO cos theta 2. ठीक है. अब इसका कितना हो जाएगा? The velocity component of source along the line joining, it will be how much? So this angle will again become how much? This angle will be θ1, right? If this is θ1, this angle will be θ1. So velocity component of source along the line joining will be how much? It will be Vs cos θ1. So you have a case, the observer is moving in this direction, source is moving in this direction. तो यहाँ पे जो apparent frequency observed by observer will be how much? It will be actual frequency into velocity of sound minus velocity component, that is V0 cos theta 2 minus, sorry, divided by velocity of sound minus velocity of source into cos theta on. क्या ये क्लियर है आपको? सर ये V minus V0 cos theta 2 ये हमने कैसे लिया? अच्छा, ध्रुवी पूछ रही है कि क्या स्क्रीन ब्लर है, ऐसा है क्या? आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन क्लियर या कोई प्रॉब्लम है? सर. दिख रहा है, ओके. आप अपना नेटवर्क चेक करो प्लीज. हाँ, आप कुछ अंजू कुछ पूछ रहे हो आप? सर सर ये V आप जब- minus V0 cos theta 2 ये कैसे आ गया? अच्छा, V माइनस V0 cos थीटा इसीलिए आ रहा है. देखो आपका सोर्स किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, राइट? सोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? एंड आपका ऑब्जर्वर किधर? ऑब्जर्वर का जो कंपोनेंट है, ऑब्जर्वर तो इधर मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी कंपोनेंट लाइन जॉइनिंग की तरफ किधर है? इज इन दिस डायरेक्शन, राइट? इस डायरेक्शन में है ना. देखो इधर आपका ऑब्जर्वर है, इसका कंपोनेंट इधर कितना है? V0 cos थीटा 2, राइट? तो आप टू कंसीडर V0 cos थीटा 2, आपको हमेशा कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? द कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर. तो हमेशा ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा. अगर दोनों एक ही लाइन पे है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू टेक V0. बट इफ दे आर इंक्लाइंड, सो यू हैव टू टेक द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम. ठीक है, तो सोर्स का भी आपको कंपोनेंट कौन सा लेना पड़ेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर. सो दैट विल बी Vs cos थीटा 1 एंड ऑब्जर्वर का जो कंपोनेंट होगा V0 cos थीटा 2. अब ये आपका माइनस क्यू हुआ, ये आपका माइनस क्यू हुआ. देखो इसमें बहुत बड़ा मिस्ट्री है. अगर दोनों आपका पैरेलल है, जैसे आपका V0 cos थीटा का कंपोनेंट किधर है? V0 cos थीटा, अगर V0 पार्टिकल जो ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है तो इसका कंपोनेंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा. ठीक है ना? अगर ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है तो इसका कंपोनेंट अलोंग लाइन जॉइनिंग किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा. आपका सोर्स अगर इधर मूव कर रहे हैं तो इसका कंपोनेंट अलोंग लाइन जॉइनिंग किधर हो जाएगा? ये भी इधर हो जाएगा. ठीक है ना? तो दोनों अगर पैरेलल है, दोनों आपका पैरेलल है, उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा? ऑब्जर्वर के लिए माइनस लेना पड़ेगा, सोर्स के लिए भी माइनस लेना पड़ेगा. अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपका भाई अगर सोर्स इधर मूव कर रहा है, सपोज आपका सोर्स जो है इधर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन एंड ऑब्जर्वर भी टुवर्ड्स द जंक्शन मूव कर रहा है, तो उस केस में आपका सोर्स का ऑब्जर्वर का जो कंपोनेंट एज इट इज ऐसा ही रहेगा और सोर्स का कंपोनेंट किधर हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा. सोर्स का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है. अब ये दोनों क्या है? देखो ये दोनों अब क्या हो गया?
ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया. It look like both are moving, both source and observer are moving with opposite direction. And in the case, it is the case like both are approaching to each other. इस केस में कैसे लग रहा है कि दोनों ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर अप्रोचिंग टू ईच अदर. इस केस में आपको क्या हो जाएगा, इस केस में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इनटू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. अब प्लस आ जाएगा यहाँ पे इनटू cos थीटा 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स cos थीटा 1. तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों पैरेलल हो रहा है या एंटी पैरेलल हो रहा है. अगर दोनों का कंपोनेंट पैरेलल हो रहा है तो आपको जो ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो माइनस लेना पड़ेगा एंड सोर्स के लिए क्या लेना पड़ेगा, सोर्स के लिए भी माइनस लेना पड़ेगा. अगर दोनों का एंटी पैरेलल है, जैसे ए भी आप टुवर्ड्स जंक्शन है, ए भी टुवर्ड्स जंक्शन है, इन केस में क्या हो जाएगा, दोनों का जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा इट लुक लाइक दे आर बोथ आर अप्रोचिंग. इन केस में क्या लेना पड़ेगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट प्लस लेना पड़ेगा एंड ये भी माइनस लेना पड़ेगा. एक्सट्रीमली सॉरी, इट शुड बी माइनस. ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. अच्छा, इस तरह की भी सिचुएशन हो सकता है. सपोज मान लो, हाँ सपोज मान लो इस तरह की केस है. सपोज योर केस इज लुक लाइक दिस कि आपका ऑब्जर्वर जो है जंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. दिस इज रोड नंबर 2 एंड दिस इज रोड नंबर 1. और जो सोर्स है वो स्टेशनरी है, यहाँ पे है. ठीक है, सोर्स इज स्टेशनरी, VS इज 0. ठीक है ना, VS इज 0. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा फिर बताओ. अगर सोर्स 0 है, सोर्स आपका क्या है, source is at rest and observer is moving towards the junction, and let us take this angle, let us take some theta 2. ठीक है ना, तो इस केस में क्या करोगे फिर, इस केस में क्या करोगे. सर सोर्स एट रेस्ट ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, उसका फॉर्मूला दे सकते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा. इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, V0 cos theta. cos theta 2. So it look like observer is approaching the source with velocity how much, observer is approaching the source with velocity how much. ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका, अगर सपोज मान लो इधर आपका ऑब्जर्वर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, V0 cos theta 2. So it look like this observer is approaching the source with velocity V0 cos theta 2. So इस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, the apparent frequency f dash will be f into v minus a plus. ऐसा नहीं लग रहा है, प्लस हाँ इट विल बी प्लस लेना पड़ेगा, प्लस प्लस V नॉट cos थीटा 2 V0 cos theta 2 डिवाइड बाय अपॉन V. V. ठीक है. अच्छा, केस ये भी आ सकता है, सपोज ओके सर. हाँ नेक्स्ट केस ये भी आ सकता है कि सपोज यू हैव this kind of situation. Observer is at rest, this is path number 2. Observer is at rest, so VO will be 0. Okay, and source VS is moving like this. Okay, this is path number 2. ठीक है ना, and let us take this angle is how much, this angle is theta 1. ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा फिर, so you can see the source is moving towards the junction along path 1, observer is at rest, this angle is theta 1. तो इस लाइन ज्वाइनिंग में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ सोर्स along the line joining between source and observer, it will be how much now, it will be VS cosine of theta 1. So the apparent frequency f dash will be how much now, f into V divided by V minus VS
cos थीटा 1। माइनस क्यों लिए? क्योंकि इस कंपोनेंट में आपका सोर्स क्या कर रहा है? इज मूव कर रहा है अप्रोचिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन। the source having velocity vs cos theta 1 is approaching towards the observer. Okay, is it clear? क्या ये sir. क्लियर है? यस सर। Okay, so if you understood this thing, let us solve one problem. So there is a motorcycle. If you understood, please do this problem. So you have a road number 1. Okay, here you have some motorcycle. You have some motorcycle or bicycle, sorry, motorcyclist. इसका वेलोसिटी गिवन है, मोटरसाइकिलिस्ट का वेलोसिटी है vs इक्वल्स टू 60 किमी पर आवर, 60 किमी पर आवर है, और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? अवे फ्रॉम दिस जंक्शन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न दैट इज गिवन, फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न इज गिवन एज f इक्वल्स टू 200 हर्ट्ज। ठीक है, एंड देयर इज ए बाइसाइकिलिस्ट, there is a bicyclist B, okay, is moving towards the junction with velocity that is given VO equals to 30 kilometer per hour. Velocity of sound they have given, that is velocity of sound is 340 meter per second. ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है? जब आपको निकालनी है द apparent frequency note down by this bicyclist. So there is a horn of this bicycle, of motorcycle having frequency कितना? 200 hertz. ठीक है, इसका वेलोसिटी मोटरसाइकिल का वेलोसिटी कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द जंक्शन, एंड मोटरसाइकिल का अवे फ्रॉम दिस जंक्शन। आपको निकालनी है apparent frequency note down by this bicyclist when they are at same distance from this junction. आपको क्या निकालनी है? The apparent frequency note down by this bicyclist when they are at same distance from this junction. मतलब सपोज मान लो अब बाइसाइकिलिस्ट का पोजीशन यहाँ पे है, तो यहाँ से जंक्शन का डिस्टेंस अगर L है, तो जंक्शन से जो मोटरसाइकिलिस्ट है उनका भी डिस्टेंस कितना होगा? L होगा। उस सिचुएशन में आपको क्या निकालनी है? द फ्रीक्वेंसी नोट डाउन बाय दिस बाइसाइकिलिस्ट कितना है आपको निकालनी है। ओके, तो आपको ये बतानी है, सपोज मान लो ए एंगल कितना है इस सिचुएशन में? 90 है, दे आर एट राइट एंगल। अच्छा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल दिस विल बी 45, गुड। दिस विल बी अगेन 45, राइट? 45। ओके, इसका मतलब जो सोर्स का कंपोनेंट है वो कितना मिलेगा आपको? VS इंटू कोसाइन ऑफ 45। ऑब्जर्वर का जो कंपोनेंट है दे आर पैरेलल, ऑब्जर्वर का कंपोनेंट कितना मिलेगा आपको? VO कोसाइन ऑफ 45। ओके, आप VS and VO they have given you in kilometer per hour, but velocity of sound क्या है? It is given in meter per second. So आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दैट यू हैव टू कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर। कैसे कन्वर्ट करोगे? So V is given as 340 meter per second. So I can write 340 divided by 1000. So मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो फिर आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सेकंड से आवर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 360 से डिवाइड करना पड़ता है। आपके पास सेकंड है, सेकंड से आपको आवर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट आपका ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? सेकंड डिवीजन में है। अगर इसको आवर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आपको एक्चुअली क्या करना पड़ेगा? 360 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से। सो नाउ इट विल बिकम
किलोमीटर पर आवर। तो सेकेंड से आवर जाने के लिए आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये वाला कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट विल बी ऑन डबल टू 4 किलोमीटर पर आवर। So now you can calculate that apparent frequency observed by this bicyclist. F dash will be how much now? So F dash will be F is given, that is how much? 200 into velocity of sound, that is on 2 to 4, minus velocity of observer, velocity component of observer, that will be VO cos 45. VO कितना है? 30. Cos 45 कितना होता है? 1/√2. Okay, then you have velocity of sound, that is on double to 4, minus of velocity source, velocity component of source, that is 60 cos 45, that is 60/√2. Okay, so F dash will be, if you calculate it, you will get basically 203.203, approximately 2036 hertz. Is it clear? क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका मोटरसाइकिलिस्ट अगर अप्रोच करते फिर क्या प्रॉब्लम, क्या चेंज करना पड़ता है यहाँ पे? मोटरसाइकिलिस्ट अगर अप्रोच करते फिर क्या करना पड़ता? If this motorcyclist is moving towards the junction, then what will be the change? क्या चेंज आ जाएगा बताओ? हाँ, डिनोमिनेटर में v प्लस vs आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा बताओ? नोमिनेटर में प्लस कर देंगे। डिनोमिनेटर में? नोमिनेटर। हाँ, न्यूमरेटर में आपका प्लस हो जाएगा ये। प्लस। हाँ, इस केस में क्या हो जाएगा? इट विल लुक लाइक, जस्ट वी हैव डिस्कस दिस थिंग, इट विल लुक लाइक बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर दे विल अप्रोच ईच अदर विथ सम वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं देखनी है आपको। अगर दोनों पैरेलल केस है तो फिर ऑब्जर्वर का जो कंपोनेंट है उसको माइनस करना पड़ेगा। इफ दे आर एंटी पैरेलल, इट लुक लाइक इफ दे आर अप्रोचिंग, देन क्या होता है? वेलोसिटी का जो ऑब्जर्वर का है वो वहां पे प्लस करना पड़ेगा एंड सोर्स का कंपोनेंट में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक स्टेशनरी है, अगर एक स्टेशनरी है एक मूविंग है, तो आपको लाइन ज्वाइनिंग का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब वो देखना पड़ेगा कि आपका अप्रोच हो रहा है या एवे जा रहा है। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखे हैं कि अप्रोच करने के लिए अगर सोर्स अप्रोच करते हैं या ऑब्जर्वर अप्रोच करते हैं तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे जस्ट क्या करना पड़ेगा आपको? वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अब वो देखना पड़ेगा कि आपका अप्रोच हो रहा है टुवर्ड सोर्स हो रहा है या अवे फ्रॉम द सोर्स, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो रहा है या अवे फ्रॉम द सोर्स। कंपोनेंट को लेके आपको उस फॉर्मूला को लगाना है जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ना कल। अब इंक्लाइन केस के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कंपोनेंट को लेना पड़ेगा। कंपोनेंट किधर? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, फिर आपको लगाना पड़ेगा जो फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिस्कस किया है कि अप्रोच करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होते हैं, एवे जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, वो सारे फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर दोनों मूव कर रहे हैं उसके लिए इस तरह के प्रॉब्लम आपका आ सकता है। एंड दिस प्रॉब्लम इज ओबियस, दिस प्रॉब्लम दे मे आस्क। ओके, सो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? यस सर। Okay, now there is a little bit part left of this wave, that is formation of beat. Formation of beat. So how that beats actually formed? So suppose you have two waves. You have two waves.
two waves, they are propagating two waves, they are propagating in same direction. Okay, when two waves they are propagating in same direction, they have same amplitude, they have same amplitude. Okay, if they superimpose, if they superimpose, if they superimpose, if they superimpose, you will basically get formation of beat. बट बीट फॉर्मेशन होने के लिए जो दो वेव है उनका फ्रीक्वेंसी को अलग होना पड़ेगा. सो beat is nothing but the superposition of two wave having same amplitude, they are propagating in same direction, but they will have some frequency difference, and that frequency difference should be f1 minus f2, that should be less than 10 hertz. अगर दो वेव के बीच में सुपरपोजिशन हो रहे तो दोनों का अगर फ्रीक्वेंसी, देयर इज सम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस एंड दैट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज. इन केस में क्या बनेगा, आपका बीट बनेगा. ओके, सो व्हेन टू वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, प्रोपगेशन डायरेक्शन सेम, बट दे हैव सम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, and if they superimpose, they will then you will get the formation of beats. For example क्या है? Anyone? So you have a tuning fork. You have a tuning fork. You have a tuning fork. Suppose this is your tuning fork number 1, and you have a tuning fork number 2. They are producing sound wave, and from this source 1, the sound wave is, let us assume that is a sine omega on t minus kx. So that wave is propagating along x direction, and from the sound that is produced by tuning fork number 2, that is y2 equals to a sine of omega 2t minus kx. And you are sitting somewhere here, so you are observer. So both tuning fork is producing sound, and they have wave equation is given a sine omega t minus omega 1 t minus kx, a sine omega 2 t minus kx. You can see their amplitude is same, frequency is different, and direction of propagation is same. Now you are sitting somewhere here, you are observer here, and your location is at x equals to 0. So what we will see? What will be the what sound you will observe? So that sound will be superposition of these two waves. So that will be y1 plus y2. And where you are sitting, at x equals to 0. So superposition of y1 and y2 at x equals to 0 will become how much? A sine of omega 1 t plus a sine of omega 2t. So y net will become, y net कितना हो जाएगा? A sine of omega 1 t plus sine of omega 2 t. साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है, बताओ? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या है? 2a. So sin a plus sin b is nothing but 2 sin a plus b by 2 into cosine a minus b by 2.
So A means omega 1 t, B means omega 2 t. So if you apply this formula, you will basically get 2A sine of omega 1 plus omega 2 by 2 into t. तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2A साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोसाइन ए माइनस बी बाई 2. So sin a plus b by 2, that will give you omega 1 plus omega 2 t by 2, and you will have cosine term. Omega 1 minus omega 2 by 2 into t. So this is the net sound that you will notice when you are sitting at x equals to 0. अब इस पोजीशन में आपको क्या सुनाई देगा? दो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है दो ट्यूनिंग फॉर्क से, यानी यू आर सिटिंग एट x इक्वल्स टू 0. आपको क्या सुनाई देगा दो साउंड का? ऐसा सुनाई देगा, कभी साउंड बहुत स्लो है, मतलब लाउडनेस बहुत कम है, फिर बढ़ता जा रहा है, एक टाइम बहुत लाउडनेस हाईएस्ट है, फिर कम होता जाएगा, फिर लाउडनेस बढ़ते बढ़ते बहुत तेजी साउंड सुनाई देगा, फिर लाउडनेस कम होता जाएगा. तो एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ लाउडेस्ट आपको साउंड सुनाई देता है उसी को बोलते हैं बीट्स, है ना. सो you have two source of sound having same amplitude propagating in same direction, they have different frequency, and you are sitting somewhere. So क्या साउंड सुनाई देगा? साउंड कभी काफी स्लो साउंड सुनाई देगा, मतलब लाउडनेस बहुत कम होगा, अचानक लाउडनेस बढ़ जाएगा, फिर लाउडनेस कम होता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा. तो एक सेकंड में जितना बार आपको नंबर ऑफ लाउडेस्ट साउंड सुनाई देगा उसी को बोलते हैं हम बीट्स. एंड बीट्स बेसिकली बिकम बीट्स, अगर कैलकुलेट करोगे बीट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, बीट्स बिकम्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली दोनों का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वही आपका बीट्स होता है. सो दो साउंड का फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2, उनका जो डिफरेंस है उसी को हम बीट्स बोलते हैं. सो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड मीन्स नंबर ऑफ लाउडेस्ट साउंड दैट यू आर काउंटिंग इन ए ऑन सेकेंड, दैट विल बी योर बीट्स. जैसे इस तरह की एक छोटा सा प्रॉब्लम करके हम चलते हैं ऑप्टिक्स में. सो लेट अस सॉल्व ए सिंपल प्रॉब्लम फ्रॉम दिस बीट. सो सपोज you have a tuning fork. You have a tuning fork. It is producing sound having frequency 5 on 2 hertz. Okay, and it make beats with piano. It make beats with piano. ठीक है, and it make beats with piano. How many beats they are producing? 4 beats per second. 4 beats per second. Okay, now this beats decrease to 2 beats per second. This beats decreases to 2 beats per second when the tension of string of piano is increased. Okay, so what you have to calculate? The initial frequency of piano. Okay, so you have a tuning fork, you have a piano. They make beats of 4 beats per second. ठीक है, अब this beats decreases to 2 beats per second when the tension of the string of this piano is increased. So what you have to calculate? Initial frequency of piano you have to calculate. कैसे कैलकुलेट करोगे? How will you calculate?
क्या क्वेश्चन समझ में है आप लोगों को? इज क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? शेखर, अंजू, ध्रुवी, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को सबको? इज दिस सर ये क्वेश्चन? पियानो का इनिशियल है ना, वो 4 बीट्स पर सेकंड। हाँ, इनिशियल फ्रीक्वेंसी नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन ये है, यू हैव अ ट्यूनिंग फॉर्क, यू हैव अ ट्यूनिंग फॉर्क, it makes 4 beat per second with piano. You have a tuning fork, it makes 4 beat per second with piano. Now if you increase the tension of this piano, tension of the string of this piano, then this beat decreases to 2 beats per second. So you have to calculate the initial frequency of piano. Is it clear? अब क्लियर हो आप yes, लोगों को? ओके, यस सर। कैसे करोगे इसको अब? ओके, 4 बीट्स मीन्स, देखो इसका क्या होता है, इसका कितना है फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क का? 512, राइट? एंड यू हैव a piano, suppose you have a piano like this, you have a string somewhere, so this is your piano, let us assume this is your piano. अच्छा, 4 बीट्स पर सेकेंड है, इसका मतलब पियानो का फ्रीक्वेंसी कितना हो सकता है? आई डोंट नो, बिकॉज आई नो दैट बीट्स क्या है? f1 माइनस f2, दैट विल बी योर बीट्स, that is your bits, right? And this frequency of on source is given, frequency of on source is given, तो इस सोर्स का कितना हो सकता है? 4 बढ़ा के 516 भी हो सकते हैं, दिस कैन बी 516 हर्ट्ज, और इट कैन बी 508 हर्ट्ज, ये भी हो सकता है। अगर जब 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है, so the frequency of this piano can be 516 और इट कैन बी 508 ऑल्सो, जब आपका 4 बीट से, देखो हो जाएगा 516 माइनस 512 कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, राइट? इफ दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पियानो इज 516, if the frequency of this piano is 516, the beat will be how much? 516 minus 512, so you are getting 4 beats per second. If the frequency of this piano is 508 hertz, then also you will get 4 beats, 512 minus 508, so you will get 4 beats per second. So this both can be possible, 516 can be possible, 508 can be possible. Now second केस क्या है आपके पास? ये आपका केस नंबर 1 है, दिस इज योर केस नंबर 1. केस नंबर 2 क्या है कि आपका इसका ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी तो कितना है? 512 ही है, दिस इज 512, बट बीट्स कितना हो गया? अब 2 बीट्स हो गया, 2 बीट्स हो गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकता है बताओ? ट्यूनिंग सॉरी पियानो का क्या क्या हो सकता है? अब सेकेंड केस में क्या हो गया? 2 बीट्स पर सेकेंड हो गया, राइट? तो इस केस में कितना हो सकता है इसका फ्रीक्वेंसी? 512 से 2 जोड़ दो, 514, इट कैन बी 514 हर्ट्ज, 514, और 512 से 2 घटा दो, 510, 510, तो दो ही हो सकते हैं। यहां से कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम? अगर 4 बिट्स है तो इनका फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है? 4 एक बार जोड़ दो 516 भी हो सकते हैं, 4 एक बार घटा दो 508 भी हो सकता है। सिमिलर 2 बिट्स जब है 512 के साथ 2 जोड़ दो 514 भी हो सकते हैं, 510 भी हो सकते हैं। अच्छा, इस केस में क्या हुआ है आपका? टेंशन जो है इंक्रीज हुआ है, स्ट्रिंग का टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज इंक्रीज, राइट? टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीज्ड, ठीक है। अच्छा, टेंशन इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्ट्रिंग का? इफ यू रिमेंबर द फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा सर। ऑफ स्ट्रिंग is how much? F equals to v by lambda, so 1 by lambda, and you have velocity on string क्या होता है? T by mu होता है,
frequency is nothing but velocity of sound divided by lambda. F equals to v by lambda. So f will be 1 by lambda into square root of velocity of sound, velocity of wave on string. क्या होता है? Velocity of wave on string, that is square root of t by mu, right? You know this formula, frequency of wave, that is nothing but v by lambda. And you know velocity of wave on string, that is depends upon square root of tension divided by mu. ठीक है ना? तो if you increase the tension, then frequency क्या हो जाएगा आपका? बढ़ेगा या घटेगा? अगर आप टेंशन इंक्रीज करोगे तो फिर स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा ओके, तो बढ़ेगा तो देखो 510 से 514 है, यानी इस केस में, सेकंड केस में जो पियानो का फ्रीक्वेंसी है पहले केस की कंपैरिजन में बढ़ना चाहिए, नहीं? सेकंड केस में जो पियानो का फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या होना चाहिए? पहले केस की कंपैरिजन में बढ़ना चाहिए, राइट? सर। हाँ, अब देखो अगर आप 516 ले रहे हो, इफ यू टेक 516, तो इस केस में क्या है? देखो आपका फ्रीक्वेंसी घट रहा है, 510 भी कम है, 514 भी कम है, बट ये आपका नहीं हो सकता है, यानी 516 फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता है, क्योंकि सेकेंड केस का जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट केस की कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। बट सेकेंड केस का फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकता है? 510 हो सकता है, या इट कैन बी पॉसिबल 514, ये भी पॉसिबल है, आइदर 514 और 510, दैट शुड बी हायर देन द फर्स्ट केस। बट 516 क्या है? इनसे ज्यादा है, सो 516 हो नहीं सकते। अब 508 पॉसिबल है। अब देखो 510 भी 508 से बड़ा है, 514 भी 508 से बड़ा है, सो इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पियानो कैन बी 508। क्या क्लियर है ये? यस सर। यस सर। क्या सबको Yes, क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है। Okay, now we'll discuss that important part of your second part, that is your optics. Let us discuss quickly some part. So in optics, first we'll discuss about that interference. So in optics, first I'll discuss about that interference of light. Interference of light. So what is interference of light? What is interference of light? Anyone? So interference of light is nothing but the phenomena of redistribution of energy due to superposition of wave coming from two coherent sources. So you can mention phenomena of redistribution of distribution of energy due to superposition of waves coming from two coherent sources.
Okay. So interference can be of two types. So nothing is there, just you have a, suppose you have a two sources applied, okay, two coherent sources applied, then the superposition of the wave that is coming from same source, and they are basically the waves coming from two sources should be almost in same direction. So the superposition of that wave that is coming from two sources, this phenomena is known as basically interference. Okay, and that source should be coherent. Okay, so that interference can be of two type. First we will discuss about that constructive interference. Okay, so if two waves, suppose you have a waves, wave A is look like this. Okay, and you have a wave B. Okay, this is your wave B. If they superimpose, then what will happen? The resultant wave, you see, they are actually in phase. You see their phase. These two waves are actually in phase. So if they superimpose, then the resultant amplitude of this resultant wave will be increased, and you will get this kind of thing. This will be your resultant. So when there is a constructive interference between two waves, then resultant amplitude will be increased. Okay, or you can say the amplitude of resultant wave will be higher than the amplitude of both waves. And for constructive interference, two waves should have phase difference कितना होना पड़ेगा दोनों wave के बीच में? Delta phi should be either phase difference is 0 or 2 pi and or 4 pi and so on. अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई है तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. पार्ट डिफरेंस क्या होता है? पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है? एनीवन? So if two wave having phase difference 0 2 pi 4 pi, then you will get basically constructive interference. You know, part difference is nothing but 2 pi by lambda into phase difference. Okay. Sorry. This is your phase difference. Phase difference equals to 2 pi by lambda equals to part difference. This will be your part difference. Phase difference equals to 2 pi by lambda into part difference. Okay, so you got this phase difference, that is 0 2 pi 4 pi and so on. Okay, so part difference कितना होगा? दो रे के बीच में अगर constructive interference हो रहा है तो part difference क्या होना पड़ेगा? So del phi you got. So del phi equals to 2 pi by lambda into path difference, right? Now del phi for constructive interference, it can be 0 2 pi 4 pi. So if you substitute 0 here, part difference will be how much? Part difference will be how much? If you substitute delta phi equals to 0, you will get part difference equals to 0. If you substitute delta phi equals to 2 pi, if you substitute here 2 pi, so 2 pi will be cancelled, part difference will become lambda. If you substitute 4 pi, then 4 pi 2 pi will be cancelled and it will give you 2, and you have lambda, so part difference will become 2 lambda. So for constructive interference, that part difference between two wave
path difference between two waves should be of the order of n lambda, and n can be 0, 1, 2, and so on. So for constructive interference, the path difference between two rays should be should be n lambda, where n can be 0, 1, 2, 3. And similarly, you have destructive interference. तो दो रे के बीच में कॉन्स्ट्रक्टिव होने के लिए दे शुड बी इन फेज. इन फेज कब होता है बेसिकली? इन फेज तभी होगा जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सो ऑन, यानी 2 पाई के ऑर्डर में होगा, तभी आपका बेसिकली कॉन्स्ट्रक्टिव होगा. तो कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए दो रे के बीच में अगर पाथ डिफरेंस कितना हो, एन लैम्डा की ऑर्डर में है, तभी आपका कॉन्स्ट्रक्टिव बनेगा. ओके, एंड एन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. And this relation is important for your exam also. Phase difference should be equal to 2 pi by lambda into path difference. Now this case is destructive interference. Destructive interference. So suppose you have a wave A, it look like this. This is your wave A, and it is making superposition with wave B. You have wave B, and this wave B is like this. Okay, and if they have same amplitude, then what will be the resultant wave? Resultant wave क्या होगा यहाँ पे बताओ? You see they are out of phase. This first for wave A, that is you have upward displacement. For wave B, you have downward displacement with same amplitude. If you sum them, how much will be the resultant? How much will be the resultant? First you have considered the first part. You see the displacement is upward for wave A, having amplitude of A. For wave B, the displacement is downwards with same amplitude. If you sum them, how much will be the resultant? कितना हो जाएगा resultant? बताओ. How much will be the resultant? Anyone? क्या समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? Are you getting? अंजू, शेखर, याचिका, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. हाँ, तो how much will be the resultant? वे हाँ, तो ये कैसे हो जाएगा भाई? ये आपका डाउनवर्ड की तरफ है, आपका अपवर्ड की तरफ है. इनके दे आर एक्चुअली आउट ऑफ फेज. ये आपका बेसिकली क्या है? माइनस ए है, ये आपका प्लस है ना, बिकॉज दिस इज डाउनवर्ड, सो दिस विल बी माइनस ए, दिस विल बी प्लस ए. So if you add them, minus and plus and minus, if you add, how much will be the resultant? 0. जीरो. This will be minus, this will be plus with same amount, so it will be 0. This will be plus and this will be minus. If you add them, it will be 0. So net displacement will be 0. There will be no displacement. So resultant wave will look like this. This will be your resultant wave. ठीक है. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना पड़ेगा? कितना फेज डिफरेंस है इनके बीच में बताओ? कितना है भाई बताओ? राइट. पाई बाई 2 है पाई? देयर फेज डिफरेंस इज हाउ मच? पाई बाई 2 और पाई? 180 का डिफरेंस है भाई. देखो ये आपका इधर है, एक आपका इधर की तरफ है और दूसरा आपका इधर की तरफ है. कितना फेज डिफरेंस है इनके बीच में? 180 है ना? 180. Yes, sir. तो दो वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, इफ दिस इज पाई, 3 पाई, 5 पाई,
अगर इस तरह की फेज डिफरेंस हो देन यू विल गेट बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना पड़ेगा बताओ? यू नो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई दैट इज नथिंग बट 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, अगर पाई रखोगे तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ? पाई रखोगे पाथ डिफरेंस कितना आएगा भाई बताओ? If you substitute that phase difference pi, so pi will be cancelled, you will get path difference equals to lambda by 2. Next, if you substitute 3 pi, then you will get 3 by 2 lambda and so on. तो दो रे के बीच में अगर पाथ डिफरेंस n plus half lambda हो, where n equals to 0 1 2 3 so on हो, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको? Destructive interference. So for destructive interference, path difference should be can be pi, 3 pi, 5 pi, and so on. And you know, phase difference is nothing but 2 pi by lambda into path difference. So path difference will be lambda by 2 pi into phase difference. अगर pi रखोगे तो path difference कितना आ जाएगा? Lambda by 2 आ जाएगा. If you substitute in place of delta phi, if you substitute 3 pi, you will get path difference 3 lambda by 2. So in short form, you can write that path difference for destructive interference will be n plus half lambda, where n can be 0 1 2 3 so on. इस केस में क्या मिलेगा आपको? Destructive interference मिलेगा. So tomorrow will you have any question? Have any question? So tomorrow actually we are going to discuss an important part of this optics, that is young double slit experiment. And not only I'll discuss that young double slit experiment, I'll introduce triple slit also. In young double slit, there are basically 2 slits are there, but I'll introduce 3 slits also, and I'll see that interference pattern. So tomorrow, please join all the people, because this tomorrow class will be very important for your JAM exam. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Good night, sir. डॉपलर के से good क्वेश्चन है, हाँ डॉपलर से क्वेश्चन है, डॉपलर जो हाँ, यह 2015 में आया question- है. हाँ बोलो. Doppler effect can be used to measure the speed of light through visual sound हाँ of ओके frequency, ओके ओके yes. sound through frequency 1.05 to 2 megahertz is Hmm. sent through the visual along direction of blood flow. The Hmm. reflection sound greatest bit single frequency 100 hertz. The speed of sound in blood is 1545 meter per second. The speed of blood through the visual in meter per second. Okay. सर ये जाम 2015 में है. अच्छा. Okay, so tomorrow we'll discuss this question. I know this question. Okay, so tomorrow I'll discuss this question, because right now I am a little bit tired. But tomorrow just that question they have asked, that speed of blood through vessel you have to calculate, right? This thing they have asked. Okay, so tomorrow I'll do this question. Okay, because it will take some time, 10 minutes it will take. Tomorrow I'll do this question. Okay. ओके सर, सॉल्यूशन समझ में नहीं आया था. ओके सर, नहीं आपको करके देंगे, कल हम डिस्कस करेंगे इसको क्लास में. ठीक है सर. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ, Thank you.